have that power in you to control your mind, because there is no one else out there who is affecting your thoughts. It's only you. Hey guys, good morning. I just woke up. It's 9:30 a.m. I thought of vlogging this day क्योंकि अब मुझे होम आइसोलेशन में ऑलमोस्ट 7 to 8 days हो चुके हैं. मेरा एक रूटीन बन चुका है. मैंने सोचा ये रूटीन क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, बिकॉज द केसेस आर राइजिंग अप एंड आई थिंक वी नीड. आई एम गोइंग टू get ready. Another day, another set of pajamas. क्वारंटीन में होते हो और अकेले होते हो रूम में, टू कीप योर सैनिटी एंड टू हैव दैट काइंड ऑफ मेंटल पीस जिसमें आपको पूरा दिन अच्छा लगता रहे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट योर डे राइट. तो आई ऑलवेज स्टार्ट माई डे बाई washing my face and brushing my teeth, which most of us do. But soon after that, I have my morning drink and I read a book that I like. And yeah, that works for me. That helps me kickstart my day. Hi guys, I am back and I just washed my face. And I think quarantine has changed my skin game altogether. I feel that my skin is glowing and it has become very hydrated lately. I have been following a skincare routine for like 10 days now and it's working wonders for me. It's very minimalistic and it's very reasonable. I'll be sharing it with you guys. Now I'll be calling my husband and I will get some haldi water for me. That is the table that we use. मुझे खाना और ये सब चीज़ें देने के लिए. And I just got my haldi water. Oh, I miss my home. मॉर्निंग ड्रिंक पीते पीते मैं एक काम करती हूँ जो मैं पहले भी करती थी और मैं अब भी करती हूँ, बिकॉज दैट्स द थिंग आई कैन डू एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ बुक्स. It never leaves you. So I am reading this book by Vex King, Good Vibes, Good Life, and this book is my Bible. I just love this book so much. मतलब मैं इसको almost एक बार पढ़ चुकी हूँ and I just have a habit of picking this up and reading it from anywhere. Or yeah, this one is a very good book. मैं अभी तक नहीं नहाई हूँ. I had to post a video from one of the brands Instagram पे and I wrote a couple of things for my Instagram again. Now I think I will go and take a shower. This is what I'm going to wear today. It's comfy and cute. So this is a joggers from the Soul store. It has this thing at the bottom which I really love, and old t-shirt from I guess only. Yeah, it's only. And yeah, that's going to be my outfit. Good great bath. I usually wash my face with this face wash these days. It's Bio Pineapple Oil Controlling Foaming Face Wash for normal to oily skin. This is working wonders for my skin, like great. And then this is, I think this is from Miniso. My husband gifted me these and for some reason I was not using it earlier. Abhi quarantine mein I started using these facial cotton pads from Miniso. These are 1,000 pieces, so I think this is a good one. तो यार इसके बाद I keep it very normal. और मैं जितने भी complex products अपने face पे use करती हूँ मेरे pimples और बढ़ जाते हैं. So that's the kind of skin I have. Then I use this, the plain old simple Gulabari Rose Glow face cleanser. I just take it in this cotton pad and then I just tap it. Tapping, I think मुझे किसी ने तो बताया था आपके pores minimize करता है. So you just need to tap your face like this.
I am not a pro at this, you guys. I hate all these things. Like, I love makeup, I love buying makeup, but then when it comes to applying, I just go to my sister. She is all amazing with these things. But then skincare to yaar zaruri hai. I know this will I don't know if you guys are into aloe vera gels, but I am very much into aloe vera gel. It soothes my skin and it works wonders. Patanjali ka Saundarya aloe vera gel is working really wonders for me. This one is केसर चंदन. एक और भी आता है, वो शायद ग्रीन वाला होता है. It's the regular one. So this also I apply. And also my mom told me you should always massage your face in the upward direction. उससे wrinkles नहीं होते हैं and like it's a good way to massage. Yup. Just tap it like this and you can see it's. After that I'm using this moisturizer. It's very small because मुझे moisturizer सूट नहीं करते. Already इतनी oily skin है, तो whenever I apply moisturizer, even when it's for oily skin, बहुत ज़्यादा मतलब sweating and बहुत ज़्यादा greasy सा हो जाता है. But for some reason this one is working. Like, it's Biomon Nectar Visibly Flawless Skin Moisturizer for all skin types, which is working wonders. लेना था, but then the girl who was selling this suggested कि you should go for the smaller one. पहले try करके देखो, if it works for you then it's good, you can buy the big one. And I think वो सही है क्योंकि सिर्फ मैं अकेली हूँ यूज़ करने वाली. And like this, I think मैंने बहुत कम ले लिया यार. ये बॉटल ना इस टाइप की है, तो इट्स लाइक कि अगर मैं बहुत ज़्यादा एकदम से लूँ तो वेस्ट भी हो सकता है. बट द अदर वन, जो द बिगर साइज, दैट इज़ द पम्प वन. सो आई थिंक दैट इज़ मोर better. Again the same thing, moisturize in the upward direction, and trust me, it will work good for you as well. I'll just apply some lip balm after that and I'll be good to go. अगर आप लोग ये स्किन केयर रूटीन ट्राई करो तो let me know in the comments down below and we'll see if it works for you as well. हस्बैंड से मज़े लेने वाली हूँ. उसका नाम गौतम है और उसको बिल्कुल भी शेव करना नहीं पसंद, तो मैं अभी उसको चिल्ला के पूछने वाली हूँ कि तुम शेव करोगे, एंड लेट्स सी वो क्या जवाब देते हैं. तुम शेव कब करोगे? मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी करूँ. तो मतलब अगर मैं बीमार हूँ तो तुम शेव भी करना बंद कर दोगे? मैं दाढ़ी रखने वाला हूँ, मैं कोहली की तरह. कोहली की तरह? विराट कोहली? हाँ, बकवास मत करिए. और तुम्हें लगता है तुम विराट कोहली लगोगे? वो तो लगना भी नहीं, बंदर की तरह. वो बंदर है और तुम क्या? I'm finally having my breakfast. This boha is good. Given the fact that we're not using onions because of the Navratri, this taste, yeah. Also, मैंने ये vlog इसलिए भी बनाया है क्योंकि COVID cases are rising up, guys, and a lot of my friends are under home quarantine, which makes me wonder कि यार मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट हो जाएगा. क्योंकि जब हम लॉकडाउन में थे ना थ्रू आउट, तब तो लाइफ वाज लाइक हमने उसको ना मान लिया था कि ठीक है लॉकडाउन इज़ आवर लाइफ नाउ. बट देन थिंग्स स्टार्टेड टू इम्प्रूव, एक होप आ जाती है. उसके बाद सडनली यू अगेन सी कि केसेस राइज हो रहे हैं, सर्ज आ गया दोबारा से और ज़्यादा ख़तरनाक जो हो गई है. तो यार इट्स सॉर्ट ऑफ अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ कि आपको एकदम से कोविड हो गया, यू आर इन अ रूम एंड आप एक अपने घर से एक रूम में लिमिट हो गए हो. एंड मेरे साथ ये हुआ है कि आई एम अ वेरी पीपल्स पर्सन, तो मुझे ना लोगों से बातें करना, बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है. तो अब जब मैं अकेली हूँ ना इस रूम में, तो एट टाइम्स आई फील कि यार आई एम अलोन या बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है सब कुछ, आई एम नॉट फीलिंग गुड. बट आई हैव ऑल्सो लर्नड इन माई एक्सपीरियंस ऑफ दिस होल कोविड थिंग कि आपको अगर आप आइसोलेट हो ना, तो यू हैव दैट पावर इन यू
to control your mind, because there is no one else out there who is affecting your thoughts. It's only you. तो अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करोगे या अपने थॉट्स को मतलब सोचोगे कि यार दिस इज़ द पर्टिकुलर थॉट दैट इज़ अफेक्टिंग मी, यू नीड टू बी अवेयर, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ वर्किंग फॉर मी. लाइक इट्स एब्सोल्युटली वर्किंग फॉर मी. जब भी मैं सोचती हूँ कि यार आई एम गेटिंग सैड या डीमोटिवेटेड, या फिर एक होता है ना आपको होप लूज़ करने लग जाते हो, आई जस्ट टेल माई सेल्फ, लुक, दिस इज़ अ बैड फेज ऑफ लाइफ. If this has come to you, you make the most out of it. You discover things that you like doing. It's a good time to reflect, guys. अगर आप कोविड में हो इस टाइम पर, अकेले हो, लॉकडाउन में हो, क्वारंटीन हो, तो प्लीज़ डोंट लूज होप. I am there with you. There's a lot of other creators, your books, your people. You have technology, man. I mean, you can always pick up your phone, call your best friend, call your mom, call your dad, or just talk to your pet if you have one. And I promise that makes things easy. I won't say कि चीज़ें टफ नहीं रहेंगी, because COVID itself is a very scary disease. आपको at times आपकी body से लगेगा कि यार why is this happening to me? But then make sure you follow all the norms. You consult a doctor, listen to their suggestions, take your meds on time, build that immunity, and get back even stronger. And make sure you aware people around you, like spread awareness, guys. Do not spread the virus, but spread awareness and tell people that it's not okay to stay out. मैं ये बोल रही हूँ, मुझे खुद बहुत अजीब लग रहा है, बिकॉज अभी से 2 हफ्ते पहले तक I was the one fighting to go out. I wanted to go out and I wanted to have fun, but then look where I landed. I'm quarantined now, and this is not okay. I mean, just going out to have fun and risking so many lives, even your own, doesn't make sense. बहुत deep conversations हो गई पोहा खाते खाते. But guys, this was important. This is extremely important. Be safe, wear your mask, sanitize your hands, and get yourself tested if you have any symptoms. That was it for my vlog. That was my morning routine in self-isolation, home quarantine. I hope you liked the video, and if you did, please hit that bell notification, like, share and subscribe. Share it with your friends and family, or anyone who just needs to watch this today. I hope you be safe, and see you on Tuesday. Bye.